Good morning, students. Today we are going to study the poem Aunt Jennifer's Tigers written by Adrian Rich. Now, before I start the poem, let us discuss something about the poem. The whole poem is written about the patriarchal society या मेल डोमिनेटेड सोसाइटी पुरुष प्रधान समाज एक ऐसा समाज इन विच द वुमेन वर नॉट ट्रीटेड नाइसली औरतों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था. Through the poem, the poet leaves no doubt in the minds of the readers that Aunt Jennifer has suffered a lot or had a miserable married life. Aunt Jennifer, जिनका जिक्र poem में हुआ है, she did not have a very happy married life. In fact, she did not have a happy married life only. उनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं था. And that is why she wanted to express what was going in her mind or through her mind in the way of art. और एक्सप्रेस इन द पॉजिटिव वे. तो वो एक एम्ब्रॉयडरी करे. शी इज एक्चुअली डूइंग एम्ब्रॉयडरी. शी इज मेकिंग in fact tigers, and through the tigers she writes one line over there that the tigers are not afraid of the men. In fact, why she says this? Because she herself in her life is afraid of the male dominated society or the tigers, we can say. Now the tigers here are a symbolic representation that she might not or she did not live a life like but she wanted to live a life like the tigers, free and confident, which she couldn't, and that is why she is expressing this in the form of her art. Now let's come back to the poem. We will go stanza wise. First English explanation, and then it will be followed by Hindi explanation a little bit for the Hindi medium students also, or those who cannot understand it very well. Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the men beneath the tree. They pace in sleek, chivalric certainty. Now, if you will see, the whole stanza, 4 lines over here, is filled up with positivity. Aunt Jennifer is making tigers on a screen. What is a screen? एक पैनल है कपड़े का जिसके ऊपर वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है, कढ़ाई कर रही है. And what she is making? She is making tigers, and the tigers would prance. Prance is not just a simple walk, but a walk with joy, with pride, a little bit jump and walk. It would walk across the screen. Bright topaz denizens. Topaz is of course yellow or a yellowish color, and here it refers to the animal, that is the tiger in the world of green. Means the background is greenish, forest का scenery है और उसमें ये tigers है. They do not fear the men beneath the tree. और उस drawing में एक पेड़ के नीचे they are men, and she says that the tigers are not afraid of the men. यहीं से हमें ये पता चलता है कि Aunt Jennifer's के दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी मनोदशा क्या है. जब वो ये कहती है कि the tigers are not afraid of the men, it means somewhere she herself is afraid of the men, and she wants to be a tiger in life, which she couldn't. Unfortunately, she wanted to be unafraid like the tigers, but नहीं हो पाया उनसे, और इसीलिए वो अपनी इस व्यथा को पोयम के जरिए कह रही है. They peace in sleek chivalric certainty. They tigers को कहा गया है. And they walk, pace, walk in sleek chivalric means they walk in a confident manner. एक निश्चितता के साथ वो जा रही है. पहला पैराग्राफ है, सॉरी स्टैंजा है. अगर आप देखोगे, राइम स्कीम, स्क्रीन, ग्रीन, ट्री एंड सर्टेनिटी. तो स्क्रीन ग्रीन, ए ट्री और सर्टेनिटी बी, और ए बी भी कह सकते हैं हम लोग. नेक्स्ट में आइए, नेक्स्ट स्टैंजा. Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool. Now Aunt Jennifer जब वो कढ़ाई कर रही है, उनके हाथ कांप रहे हैं. क्यों कांप रहे हैं? क्योंकि वो एक बोझ के तले दबी हुई है. She is undergoing or she is experiencing the pressure, the pain of the married life. See once again. Aunt Jennifer's fingers fluttering through a wool find even the ivory needle hard to pull. Now needle, any needle, here it's an ivory needle, हाथी के दांत का बना हुआ ivory. Any needle is very light in weight. आप उसको आसानी से खींच सकते हो, मगर एक नीडल जैसी हल्की चीज को भी वो आसानी से खींच नहीं पा रही है. Why? अगला 2 लाइन बताता है. Because of the massive weight
of uncle's wedding band. ये wedding band उस अंगूठी को बोला जाता है, wedding ring जिसको हम लोग कहते हैं, जैसा हम लोग जानते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में. और वो रिंग जो उनके हाथों में है, वो फिंगर्स में है, दैट इज एक्चुअली वर्किंग एज अ मैसिव वेट. एक बहुत भारी वजन के जैसा वो है. मैसिव वेट हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है. द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड. वो उनके हाथों पर वो जो बोझ है, एक वैवाहिक जीवन का बोझ है, वो इतना भारी पड़ रहा है उनके ऊपर कि अब एक सुई का भी उनको वजन फील हो रहा है. एंड शी इज अनएबल टू पुल इट आउट ऑफ द वुल. फिर यहाँ पर एक बार देखिए, वुल, पुल, बैंड, हैंड. अगर आप लास्ट 4 वर्ड को देखेंगे तो राइम स्कीम ए ए बी बी है. एंड फिंगर्स फ्लटरिंग. द कॉन्सोनेंट एफ हैज बीन रिपीटेड, फ और एफ साउंड हैज बीन रिपीटेड. तो दिस इज कॉल्ड एलिटरेशन. एक मार्क्स का क्वेश्चन कभी कभी बोर्ड में आ जाता है. What is the literary device used, or what is the rhyme scheme of the given stanza? Now let's move on to the third stanza. When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. यहाँ एक दो वर्ड पहले समझ लीजिए. ordeals. ordeals refers to the prolonged painful experiences. वो जो दर्द भरी दास्तान या दर्द भरे अनुभव जो उनके अपने जीवन में हुए हैं. और देखिए, एक पेट्रियार्कल सोसाइटी या मेल डोमिनेटेड सोसाइटी का एक आप कह सकते हो, दिस इज एन आयरनी दैट इवन आफ्टर योर डेथ, व्हेन यू आर बीइंग बेरिड, व्हेन यू आर इन अ कॉफिन, व्हेन यू आर इन द ग्रेव, स्टिल दैट रिंग इज इन योर फिंगर्स, व्हिच इंडिकेट्स दैट आप मुक्त नहीं हुए हो उस समाज से. व्हेन आंट इज डेड, हर टेरिफाइड हैंड्स बिकॉज दे हैव पास थ्रू वेरी हार्ड एंड बिटर एक्सपीरियंसेस. बहुत कड़वे अनुभव के साथ वो है. स्टिल रिंग्ड विथ ऑर्डिल्स शी वाज मास्टर्ड बाय. ये मास्टर्ड बाय वो अंकल हु most probably her husband, who actually worked as a master for her. The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. 2 line last में the poet ends saying that, well, whatever life I had, but believe me, my tigers, unafraid, they are going to walk throughout their life, and that too proud of themselves and unafraid. Actually, the tiger represents her energy, the tigers represent her energy, the proudness that she wanted to have and experience, and of course she was unafraid of that she wanted to show. तो ये पूरी पोयम अगर आप देखोगे तो ये एक आन जेनिफर के माध्यम से the poet wants to talk about the society or about a society in which women were treated indifferently. I hope you understood the poem. Remember the rhyme scheme and the alliterations, and of course the name of the poet. Thank you very much.